Good morning, everyone. I'm your teacher Hemlata with you, and today we are going to understand chapter 20 with you, that is the excretory system and its products. Chapter 19. So I'm going to share the screen with you. The excretion we have to understand now. All the vertebrates have primary function of the kidney to remove the excretory waste that we know. Kidney regulate body fluid levels as a primary duty and remove waste as a secondary one. So it is regulating the body fluid levels. Kidney is regulating the body fluid levels, and it's doing first function, that is the first function kidney do, and it removes the waste as secondary one. Human excretory system is made up of kidneys, ureters, bladder, urethra, and the nephron. An evolutionary modification of nephridium is a kidney's functional unit. So सभी वर्टिब्रेट्स में किडनी हमारी बॉडी फ्लूइड को मेंटेन करती है, साथ में वेस्ट भी प्रोड्यूस करती है। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में किडनी होती है, यूरेटर्स होते हैं, ब्लैडर होता है और यूरेथ्रा होता है। एंड एवोल्यूशनरी हम जानते हैं कि किडनी एवोल्यूशन से बनी है। पहले नेफ्रीडियम होते थे स्मॉल ऑर्गेनिजम्स में, और अब किडनी होती हैं। So that is the structure we know. Kidneys have evolved in higher organisms. And nephrons are the functional unit of the kidney. Waste is filtered from the blood and collected as urine in each kidney. Urine leaves the kidney by ureter and collect into bladder. The bladder can distend to store urine, eventually leaves through the urethra. So these are the parts of the excretory system and with their function, that two kidneys are there, bladder is there, urinary urethra is there. So we can search the excretory system diagram so that you can understand that what we are talking about. This is the excretory system diagram, as you can see on the screen now. So our kidneys are there too in so these are the excretory, two in number. Kidneys are there. One number labeled is the ureter, and three is labeled is the urinary bladder, and then fourth is the urethra. So we study in this manner that there are excretory system. Now we're coming to the next topic, which is the nephron. Nephron consists of a cup-shaped capsule containing capillaries. Nephrons are the functional unit of the kidney. So they contain capillaries and the glomerulus and a long renal tubule. So long renal tubule is there. Blood flows into the kidney through the renal artery, which branches into capillaries associated with the glomerulus. So arterial pressure causes water and solute from the blood to filter into the capsule. And the fluid flows through the proximal tubule, which include the loop of Henle, and then into the distal tubule. The distal tubule empties into collecting duct, and fluid solutes are returned to the capillaries that surround the nephron. So nephron diagram is shown here. You can see that there is a network of capillaries called glomerulus inside the first part of the nephron, called as the Bowman capsule. This yellow color structure, which I'm marking by the red, is Bowman capsule, first part of the nephron, and then it is having the proximal convoluted tubule and then a U-shaped loop of Henle, and afterwards there is distal convoluted tubule. And in this,
The afferent arteriole, you can see, is larger in diameter. It's bringing the blood into the blood is going inside the glomerulus from the afferent arteriole, and it's going out from the So this is the diagram of the nephron. When the fluid comes with the pressure, then blood comes with the pressure. Then the filtrate is going inside. You can see by the arrow inside the this tubular part of the nephron. And finally, the waste which is produced, the urea which is produced, will be poured into the collecting duct. Nephron has three functions: glomerular filtration of the water and solutes from the blood. First function of the nephron is that glomerular will filtrate the water and solute from the blood. Tubular reabsorption of water and conserved molecule back into the blood, and tubular secretions of ions and other waste products from the surrounding capillaries into the distal tubule. Glomerular filtration of, पहली बात तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन करेगा वाटर का, सॉल्यूट्स का भी फ्रॉम द ब्लड, देन ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन करेगा वाटर का, कंजर्वेशन मॉलिक्यूल को, कंजर्व मॉलिक्यूल्स को वापस लाएगा ब्लड में, जो ब्लड के लिए बहुत जरूरी है, उन्हें वापस लाएगा, एंड ट्यूबुलर सिक्रीशन ऑफ आयंस भी करेगा एंड अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स करेगा नेफ्रॉन into the capillaries. Nephron filters 125 ml of blood body fluid per minute. So nephron 125 ml body fluid को filter करता है, filtering the entire body fluid component 16 times each day. हर दिन 16 बार पूरे body fluid को वो filter कर देता है. In a 24-hour period, nephron produce 180 liters of filtrate. इतना लीटर filtrate nephron बनाता है, of which 178.5 liters are reabsorbed. इतना filtrate वापस reabsorb जाता है body में, and the remaining 1.5 liters urine बन जाता है. Urine production, urine जो बनता है filtration in the glomerulus and nephron capsule, steps हैं, 3 स्टेप में यूरिन बनता है. फिल्ट्रेशन होता है ग्लोमेरुलस में, नेफ्रॉन के कैप्सूल यानी कि कॉमन कैप्सूल में, देन रीअब्जॉर्प्शन होता है इन द प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, एंड ट्यूबुलर सिक्रीशन होता है इन लूप ऑफ हैंडलिंग. So filtration in the glomerulus taking place, reabsorption in the proximal tubule, tubular secretion in the loop of Henle. Components of nephron. Nephron के क्या components हैं? Glomerulus mechanically filters blood. Glomerulus पहला component है जो कि mechanically blood को filter कर रहा है. Bowman capsule mechanically filter कर रहा है blood को. Proximal convoluted tubule approximately 75% water, salt और glucose को, amino acids को reabsorb कर रहा है. Proximal convoluted tubule, loop of Henle यहाँ counter current system के exchange की वजह से maintain कर रहा है concentration gradient. Distal convoluted tubule का work है tubular secretion of H ions, potassium ions and certain drugs. So distal convoluted tubule will be doing secretion of hydrogen ions, potassium ions and certain drugs. Hormonal control of water and the salt. How the action of the control of water and salt is done, that we have to study here. Water reabsorption is controlled by antidiuretic hormone, ADH, in negative feedback. So वाटर रीअब्जॉर्प्शन कंट्रोल करने वाला जो हार्मोन है उसका नाम ADH है. नेगेटिव फीडबैक में ये कंट्रोल करता है. ADH रिलीज फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड इन द ब्रेन. ADH पिट्यूटरी ग्लैंड ब्रेन में जो है उससे रिलीज होता है. अगर इसके लेवल ड्रॉप हो जाते हैं तो fluid in the blood signal the hypothalamus to cause the pituitary to release ADH. So dropping levels जब बॉडी में बहुत ज्यादा बॉडी फ्लूइड ड्रॉप हो जाते हैं तो ब्लड
ब्लड में भी बॉडी फ्लूइड्स कम हो जाते हैं, तो हाइपोथैलेमस के पिट्यूटरी को सिग्नल देता है, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को कि एडीएच रिलीज करे ब्लड में। ADH एक्ट एज इंक्रीजिंग वाटर एब्जॉर्प्शन, वो फिर वाटर एब्जॉर्प्शन करवाता है किडनी से। दिस पुट मोर वाटर बैक इनटू द ब्लड, इसकी वजह से ब्लड में वापस ज्यादा पानी आ जाता है। इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ द यूरिन व्हेन टू मच फ्लूइड इज प्रेजेंट इन द ब्लड, सेंसर्स इन द हार्ट सिग्नल्स द hypothalamus to cause a reduction of the amounts of ADH in the blood. ये ज्यादा वाटर बैक करता है ब्लड में और इसका कंसंट्रेशन यूरिन का बढ़ाता है। When too much fluid is present in the blood, जब बहुत ज्यादा फ्लूइड होंगे ब्लड में तो हार्ट के जो सेंसर्स हैं वो हाइपोथैलेमस को फिर सिग्नल देंगे ताकि एडीएच का रिलीज बंद हो जाए और एडीएच ब्लड में कम हो जाए। दिस इंक्रीजेस द अमाउंट ऑफ वाटर एब्सॉर्ब बाय द किडनी प्रोड्यूसिंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ मोर डाइल्यूटेड यूरिन। इसकी वजह से अब किडनी ज्यादा पानी एब्सॉर्ब कर लेती है किडनी और उसके लार्ज क्वांटिटी में डाइल्यूट यूरिन को रिलीज कराती है। एल्डोस्टेरोन, अ हार्मोन secreted by the kidney, regulates the transfer of sodium from the nephron to the blood. एल्डोस्टेरोन वही दूसरा हार्मोन है जो हार्मोन किडनी रिलीज करती है और ये रेगुलेट करता है ट्रांसफर ऑफ सोडियम एंड फ्रॉम द नेफ्रॉन टू द ब्लड। जब सोडियम लेवल ब्लड में ड्रॉप होने लगते हैं, एल्डोस्टेरोन रिलीज कर दिया जाता है इनटू द ब्लड, which causes more sodium to pass from the nephron to the blood. ये सोडियम लेवल्स को ब्लड में मेंटेन करता है, फ्लूइड से सोडियम को रीअब्सॉर्ब करवाता है एल्डोस्टेरोन। दिस कॉजेज वाटर टू फ्लो इनटू द ब्लड बाय ऑस्मोसिस, इसकी वजह से पानी भी एब्सॉर्ब हो जाता है क्योंकि जब सोडियम एब्सॉर्ब होता है तो उसके साथ साथ पानी भी रीअब्सॉर्ब होता है। Renin is released into the blood to cause to control aldosterone, और ब्लड में रेनिन भी रिलीज होती है एल्डोस्टेरोन को कंट्रोल करने के लिए। यहाँ पर हमने शॉर्ट में कंपोनेंट्स ऑफ नेफ्रॉन पढ़ लिए, रेगुलेशन ऑफ नेफ्रॉन भी पढ़ लिया थ्रू एडीएच एंड थ्रू रेनिन, एल्डोस्टेरोन, एंड नेफ्रॉन का फंक्शंस पढ़ लिए, and we have also studied about the excretion and the excretory system. I think आपको ये वीडियो समझ में आई होगी. So if you have liked the video, then you can hit the like button and share and subscribe my channel. With more such videos, with your friends you can share who are in 11th and 12th class, who are doing their revision for their final exams or studying for NCE NEET exam. Thank you and have a nice day.